Hello, good evening to all. Am I audible to all? Yes, ma'am. Okay, Yes, madam. okay, thank you. Slide is visible. Yes, ma'am. Okay, so myself Suhana Begum as an assistant professor, Nabhakrishna Chaudhary College of Teacher Education Angul in Educational Studies Department. So today we will discuss about your paper MES-104. The paper name is Planning and Management of Higher Education. Here 4 blocks. Block number 1, Planning and Management of Higher Education in India, a macro perspective. Unit 1, Planning and Management of Higher Education in India. So here the objectives of the paper or unit. After going through this unit, you will be able to state the goals and objectives of the process of higher education, then identify the significant trends and development in higher education, then analyze various issues involved in the planning and management of higher education in India. That means what are the issues are involved in the planning of management higher education in India, then explain in the light of emerging challenges what are the challenges and the issues we are facing in the development planning in higher education, then what are the major strategies and approaches and the thrust areas for development planning in higher education. Then introduction part. Higher education in India has evolved significantly over the past 2 centuries, transitioning from colonial structure to an expansive system that serves a vast and diverse population. The roots of modern higher education were established during British rule, but post-independence development have been aimed at aligning education with national socio-economic goals. This document explored the planning, management, and challenges of higher education in India. We can use both bilingual or English. Hello? Ma'am, bilingual. Okay. Are you from Odisha? Yes. Okay. Then introduction रे देखिबा हमें ना हायर एजुकेशन इन इंडिया हमें देखिले कि हमरो पेपर ना होची प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हमर जो MES 104 अछि तार पेपर ना हैला प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मींस हमरो हायर एजुकेशन को केमिति हमें प्लान एंड मैनेज करिबा ता विषय हमें देखिबा देन ब्लॉक 1 रे जोटा अछि तुमरो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन मैक्रो पर्सपेक्टिव इन इंडिया तो इंट्रोडक्टरी पार्ट रे तुमरो हैला ना हायर एजुकेशन इन इंडिया हैज इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट 2 centuries, transition from colonial structures to an expansive system that serve a vast and diverse population. ଆମର 2 ଶତାବ୍ଦୀରୁ 200 ଶତାବ୍ଦୀ ହେଇଗଲାଣି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆମର ଯୋଉ ଏଜୁକେଶନାଲ ସିଷ୍ଟମଟା ଅଛି ହାୟର ଏଜୁକେଶନ ସିଷ୍ଟମଟା ସେଟା କେମିତି ଡାଇଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭାଷ୍ଟ population को से expansive କରୁଛେ. The roots of modern higher education were established during British rule, but post-independence development have been aimed at aligning education with national socio-economic
goals. Then this document explored the planning, management and challenges of higher education in India. Then तारो किछि हमें देखिबा historical overview higher education in India कोन कोन तारो historical overview अछि हमरो ब्रिटिश रूल आरंभ हवा पूर्वरु India has a long history of higher education dating back to institutions like Nalanda, Bikramshila, Vallavi, and Takshashila. However, the modern system of higher education was set during British rule. आमे जति देखिबा कि आमे जति British rule हमको शासन करि नथिला ता पूर्वरु थिला different types of institution थिला नालंदा विक्रमशिला बल्लभी एंड तक्षशिला किंतु वर्तमान जो हमर एजुकेशन सिस्टम अछि सेटा प्राय तो ब्रिटिश रूल रो अंडर रे से आसुची Then higher education in colonial India. The modern university system in India was established in 1857 with the founding of three presidency university in Bombay, Calcutta and Madras. आमे जदि देखिबा कि हमरो तीनटा प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी हमरो एस्टैब्लिश हेतला 1857 रे ना बॉम्बे रे कलकत्ता एंड मद्रास द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन वर primarily two माने कोन पे तीनटा प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी हमरो फर्स्ट एस्टैब्लिश हेतला 1857 रे ना फैमिलियराइज स्टूडेंट्स विथ यूरोपियन थॉट एंड कल्चर माने जो यूरोपियन थॉट थिला जोटा हमरो ब्रिटिश रूल जो आसिला सी टाइम रे जो यूरोपियन थॉट यूरोपियन चिंताधारा एंड यूरोपियन रे जो कल्चर अछि ता सहित स्टूडेंट्स माने पूरा भलो भाबरे फैमिलियराइज हेबे then provide a workforce for administrative functions in British India, then train personnel for colonial administration. Then during this period, scientific and technical education was largely ignored. सेतेबेले एते हमरो science and technology नथिला. Then except for discipline like civil engineering, which were required for maintaining colonial infrastructure. Colonial infrastructure that means से period रे जे हमको शासन करथले. As a result, India inherited an education system that was quantitatively limited and qualitatively insufficient for a nation building. जदि हमें देखिबा इंडिया रे सेतेबेले कोन एजुकेशन सिस्टम थिला ना तारो क्वांटिटी जो थिला क्वांटिटी जदि हमें कहिबा हायर एजुकेशन या एजुकेशन सिस्टम बहुत लिमिटेड थिला एमती नै कि नथिला थिला किंतु बहुत लिमिटेड थिला किंतु क्वालिटेटिव इनसफिशिएंट जदि क्वालिटेटिव कथा कहिबा क्वालिटेटिव बहुत इनसफिशिएंट थिला एते क्वालिटी एजुकेशन नथिला सेतेबेले बुझा पड़छ समस्त को then Okay, madam. Okay, next देखिबा then ancient and medieval higher education system देखिबा कि ancient और medieval period रे higher education system केमती थिला ना India has a rich tradition of higher education with renowned institutions such as जदि आमे से माने जेतेबेले हमको शासन करूथिले ब्रिटिश माने जदि सेई टाइम रे हमें देखिबा ता पूर्वर ना हमरो सेतेबेले ट्रेडिशन एंड कल्चर को हमें बहुत धरि के रखिथिले सेतेबेले हमरो बहुत रिच ट्रेडिशन एंड कल्चर थिला जोटा कि वर्तमान प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन रे जोटा कि सेटा एबे देखिया को मिलु नाही India has a rich tradition of higher education with renowned institutions such as Nalanda and Bikramshila University, जोटा कि बिहार रे अछि. Then Takshashila University now in Pakistan. Then Vallavi University now in Gujarat. These institutions were globally recognized learning centers and contributed significantly to knowledge dissemination. এই जो इंस्टीट्यूशन गुड़ा को अच्छी ए गुड़ा को ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लर्निंग सेंटर थिला माने पूरा ऑल वर्ल्ड रे एगरा ए गुड़ा को फेमस थिला माने ऑल वर्ल्ड रे आसिकी स्टूडेंट्स माने एठी पढंती then globally recognized learning centers and contribute significantly to knowledge dissemination. However, this ancient institution declined due to invention and socio-political changes. सेतेबेले हमरो ब्रिटिश रूलर माने आसिले से धीरे धीरे एंशिएंट इंस्टीट्यूशन मेडिएवल इंस्टीट्यूशन सब कोन हैला ना डिक्लाइन हेबाग लागिला ड्यू टू इन्वेंशन एंड सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस. देन हम देखिबा हायर एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल आमे एबे जे जोडा पढितले तार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम पढुथले कि जेतेबेले ब्रिटिश माने हमको शासन करि नथिले ता पूर्वरु केमिति सब
एजुकेशन सिस्टम थिला। Modern higher education in India emerged during British rule, mainly following the Wood Dispatch of 1854, which led to the establishment of three major universities. जदि आमे ब्रिटिश रूल टाइम रे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल समय आमे कहबा कि हमरा हायर एजुकेशन सिस्टम केमती थिला इंडिया रे, तो से सेही टाइम रे हमरो गोटे कमिशन आस्थिला जोटा कि आमे वुड डिस्पैच बोली कहूचे, वुड डिस्पैच 1854, which led to the establish of three major universities. से तीन टा major university establish करथिला। गोटे होची जोटा कि हम फर्स्ट कहथली थ्री प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटीज, University of Calcutta, University of Mumbai, Bombay, and University of Madras. The primary aim of this institution was to provide legitimacy to British rule by creating a class of educated intermediaries, then train personnel for colonial administration, then focusing on civil engineering rather than disciplines like metallurgy that would have fostered industrial independence, then introduce European thought and culture values, ensuring ideological control over the Indian populace. Then, despite this limitation, British era education stimulated intellectual discourse, contributing to India's freedom movement. Then देखिए हमें post independence reform and policies developments. हमरे independence ପରେ कौन कौन हमरो policies reforms ହେଇची, then कौन कौन हमरो educational policy reforms ହେଇची कि आउ किछि हमरो policies development ହେଇची. After independence, education was recognized as a key driver for national development. Various commission and policies were established to reform the education system. फर्स्ट वन आम देखा जोटा कि आमर आम जितेबले इंडिया जितेबले स्वाधीन है गोटे बाहर फर्स्ट आम से कमिशन कहबा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन 1948-49 सेटा आम कहबा द नोन इज द राधाकृष्ण कमिशन. The setting of the University Education Commission, popularly known as the Radhakrishnan Commission, in 1948 was a major landmark for enunciating the goals and objectives of higher education in independent India. This was to suggest that the nature of restructuring that was needed in university education and the improvement necessary to make it suit the present and future requirement of the country. So Radhakrishna Commission jodi se kon korthile na was one of the first major initiative to assess and improve higher education in independent India. Independent India जेतेबेले हैला सेही टाइम रे राधाकृष्ण कमिशन केते गुडे मेजर इनिशिएटिव नेइथिले हमरो हायर एजुकेशन को असेस करिया पे एंड इंप्रूवमेंट आनिया पे. So there are some key recommendation include first होची fostering democratic values and scientific temper in students. से फर्स्ट करथिले कोन fostering democratic values जोटे कि हमरो different kinds of democratic values अछि. कोन कोन हमरो democratic values अछि कहि परिबो कि? हेलो कौन कौन डेमोक्रेटिक वैल्यूज अच्छे जमती कि आम देखा डेमोक्रेटिक वैल्यूज आम रहा रेस्पेक्ट इक्वालिटी फेयरनेस फ्रीडम देन एप्रिसिएशन है ये सब जो आम डेमोक्रेटिक वैल्यूज अच्छी सेटा को केमिति आम फॉस्टर करबा या आम ताको इम्प्रूव करबा एंड साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट्स मीन्स जहाँ भी आम पाखे साइंस एंड टेक्नोलोजी रो नॉलेज अच्छी सेटा को भी आम पिलामानक भितरे ताको फॉस्टरिंग करबा. Then enhancing postgraduate education and research to avoid excessive
specialization. Then expanding rural education and improving agricultural education. से कहला कि जो जहाँ भी हमर हायर एजुकेशन अछि सेटा को हमें रूरल एजुकेशन को एक्सपैंड करिबा एंड हमर एग्रीकल्चरल एजुकेशन जहाँ जहाँ हमें दबा कथा सेटा को भी इम्प्रूव करिबा सेथि पई एनईपी 2020 वर्तमान पिल्ला मानको क्लास 6 रे वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करूची हैला तो रिप्लेसिंग इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विथ इंडियन लैंग्वेज तापरे जो गोटे ब्रिटिश टाइम रे बेसी से माने इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन करथिले हैला तो सेटा को से माने रिप्लेस करी कि विथ इंडियन लैंग्वेजेस दैट मींस कि हमें से रीजन रो जो लैंग्वेज से माने यूज करंती से लैंग्वेजेस से माने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को यूज करि पाइबे इन our education system. Then preventing overcrowding in universities and increasing the number of working days. Then आम देखा education commissions and policies. से टाइम रे आ कौन कौन education commissions and policies establish होता या publish होता हम जो देखा राधाकृष्णन commission को समय रे ना following the राधाकृष्णन commission several policy documents shape the growth of higher education. बहुत सारा policies and policy document जोटा कि सेटा यूज होता हमरो हायर एजुकेशन ग्रोथ पई फर्स्ट होची education commission is also known as what is the another name of education commission? कोठारी कमिशन. Very good. Then education commission is known as Kothari Commission, established in 1964 to 66. Okay, से तांको हिसाब से कहले कि recommended is 6% GDP allocation to education. से कहले कि हमर जो 6% GDP रोची सेटा को हमें कौन करिबा ना एजुकेशन रे हमें यूज करिबा. Then national policy on education NPE, National Policy on Education NP 1968 focused on education expansion and quality enhancement. NEP 2020 जाए हमरा केतेटा national policy on education हेचे कहि परिबो केतेटा हेचे हमर गोटे हेचे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 सेटा गोटे अछि हला जोटा कि हमर सेथिरे कोन कहिथिले ना फोकस्ड ऑन एजुकेशन एक्सपेंशन एंड क्वालिटी एनहांसमेंट को आ गोटे हमर हेची नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आ गोटे कोन हेची ना जोटा हमर थिला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को ताको आउट टिके से माने मॉडिफाई करिके प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 then last one is NEP 2020 तो आमे जदि देखिबा इंडिपेंडेंस इंडिया टू ए जाए हमर चारिटा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन अछि तो challenges of education a policy perspective 1985 highlighted concern about access and quality. आमे जदि देखिबा कि एजुकेशन कमिशन एंड पॉलिसी जेते भी हमर एजुकेशन एंड पॉलिसीज अछंती माने अछि सेगुडा को सब कोन पे से माने निजर माने रिकमेंडेशन देछंती ना सबुथिरे सेम जिंस ही प्राय तो देखा जाए कि से बेसी फोकस करंती कहा ऊपर ना फोकस्ड ऑन एजुकेशन एक्सपेंशन फोकस्ड ऑन क्वालिटी एनहांसमेंट देन फोकस ऑन एक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन माने प्रायतः आम जदि देखिबा हमरो केमिति क्वालिटी एनहांसमेंट हवा हायर एजुकेशन छाड़ी दियो एजुकेशन सिस्टम रे केमिति क्वालिटी एनहांसमेंट हबो केमिति हमरो से गुडा को माने क्वालिटेटिव गोटे हबो तापरे सेठो केमिति हमरो एजुकेशन टाको हम एक्सपांड करिबा. Okay, the National Policy on Education NEP 1986 emphasized universal access. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା 1986 policies କଣ କହିଲା ନା emphasize universal access so ମାନେ ଆମର ଯୋଉ education system ଟା universally access ହେଇଥିବା ଦରକାର then open learning system ଥିବା ଦରକାର and skill based education. ଯଦି ଆମେ open learning system କଥା କହିବା open learning ର ଗୋଟେ example ଦେलो
कुह मैडम आमे ए जो कोर्सटा करछु इग्नो गोटे ओपन लर्निंग ओके वेरी गुड आम से ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन भी कहि परिबा हो तो जहाँ भी हमर अछि इग्नो हे गला एनआईओएस हे गला ओपन स्कूलिंग सिस्टम हैला ये सब होची कोन ओपन लर्निंग then skill based education that means the different kinds of vocational skill based education जोटा कि पिला मानन को दिया होची आईटीआई हे गला नर्सिंग ट्रेनिंग हैला डिप्लोमा हैला ये सब जिंस भी स्किल बेस्ड एजुकेशन रे आसीबो then program of action 1986 and 1992 से कौन है ना इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर एनपी 86 माने हमर 86 रे जहा किछि अल्प गुडा जहा किछि मॉडिफिकेशन थिला सेटा हमर 1992 रे सेमे सेटा को इम्प्लीमेंट करले देन डिस्पाइट this recommendation many issues such as poor funding lack of infrastructure and faculty shortage persisted जदि आम देखा ये रिकमेंडेशन गुड़ाक कौन कौन इश्यूज या चैलेंजेस फाइंड आउट है ना आमर सब जिन होमती एनईपी 2020 आसी इंडिया को एनईपी 2020 हो गला माने आसीगला किंतु इम्प्लीमेंट करने को टाइम लगुच से सब गोटे गोटे टार्गेट ईयर से रखिंट कि बाय 2030 सुधा आमर जिते गुड़ा ट्रेनिंग कॉलेज अच्छी से गुड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन हो बाय 2030 सुधा जिते आमर 2 years बीएड अच्छी से गुड़ा बंद हो 1 year बीएड हम देन आईटीपी हो तो ये सब जिन गोटे टार्गेट ईयर रखिंट कौन ना देखिए से जिते जहाँ जिते नुआ पॉलिसीज आसूची जो इम्प्लीमेंट कर बहुत सारा से इश्यूज फेस कर पुअर फंडिंग न फंडिंग भी भल से न पुअर फाइनेंशियल थिबो देन आउ कौन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर थिबो फैकल्टी शॉर्टेज थिबो तो ए गुड़ाक जो ही कौन हुए ना ए गुड़ाक बेसिक इश्यूज ए गुड़ाक नथिले गोटे इंस्टीट्यूशन आमे चलै परिबा नाही ओके तुम ए पेपर रे मात्र 4 जण जॉइन हिचो कि मात्र 4टा स्टूडेंट तुम्हें ए पेपर नहीं छ आज्ञा मैडम 4 जण ही देखु छी ओके ठीक अच्छे तापर हमें देखिबा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम आमर कौन कौन स्ट्रक्चर अच्छी हायर एजुकेशन सिस्टम रे इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम रे हमें देखिबा फर्स्ट जेते बेले आम देश स्वाधीन होता से टाइम रे है इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज विथ डिस्टिंक्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स फर्स्ट होची यूनिटरी यूनिवर्सिटीज मीन्स ना these institution focus on teaching and research with a single campus जोटे कि माने होची कि गोटे सिंगल कैंपस भितर ही पिला मानन को टीचिंग दिया जिवो ता सहित तारी भितर ही रिसर्च करा जिवो तो एग्जांपल हमें नहीं जिबा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू तापरे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज यही सब यूनिवर्सिटीज मानकर कौन हुए ना तांकर सिंगल कैंपस थाए तार भितर ही तांको टीचिंग दिया जाए रिसर्च करा जाए सब ता भितर ही थाए देन फेडरल यूनिवर्सिटीज देखिबा these have constituent colleges where teaching is shared between the university and its affiliated institution जदि फेडरल यूनिवर्सिटीज कथा कहिबा ना से यूनिवर्सिटीज कोन करूची ना से यूनिवर्सिटी कंस्टिट्यूट कॉलेजेस से कॉलेजेस सहित कंस्टिट्यूट करूची where teaching is shared between the university माने यूनिवर्सिटी थिबो ता भितरे से केते गुडा affiliated institute सहित तार कोरिलेशन हेथिबो हैला जेमति कि हम उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर रे बहुत सारा एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन भी अच्छी एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एठी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कथा कहै छी ला जदि हमें एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज देखिबा दिस यूनिवर्सिटी हैव मल्टीपल एफिलिएटेड कॉलेजेस spread across a region but exercise only limited academic control तो ये आसला कौन ना एग्जांपल है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई आ गोटे देखा जाऊनी से यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एंड मद्रास
यूनिवर्सिटी हैला ये यूनिवर्सिटी रे कोन होची ना एफिलेटिक यूनिवर्सिटीज रे कोन कहले सॉरी मो एटा फर्स्ट जोटा अछि पड़े बोला हाँ एटा जोटा अछि कि बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड इट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन एठी इंस्टीट्यूशन कथा कुहा है केवल इंस्टीट्यूशन जे कोन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमें नहीं परिबा हैला तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तापरे एठी एफिलिएटिक यूनिवर्सिटी कथा कुहा है जेतबे एठी हमरा आसीबो उत्कल यूनिवर्सिटी हैला जेहेतु ता भितर एफिलिएटेड मल्टीपल कॉलेजेस अछि जोटा कि स्प्रेड अक्रॉस ए रीजन जदि हमें ओडिसा रीजन कथा कहबा तो ओडिसा रीजन रे डिफरेंट जगह रे कोन अछि ना एफिलिएटेड कॉलेजेस अछि जोटा कि हमर उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर रे रहउछि बट एक्सरसाइज ओनली लिमिटेड एकेडमिक कंट्रोल सेठी केवल एकेडमिक कंट्रोल ही तांको दिया होथो हैला तो एग्जांपल हमर हैला यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और तापर हम देखिबा रोल ऑफ यूजीसी एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज कोन कोन हमर अछि रोल ऑफ यूजीसी एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज the first the university grant commission UGC was established in 1956 जोटा हमें कहूचे कोन ना कोठारी सॉरी कोठारी कमिशन जोटा हमें यूजीसी कहूचे हैला तो यूजीसी केबे एस्टैब्लिश हेतला ना 1956 रे तार मेन रिकमेंडेशन कोन अछि हमें तमे देखुथबो यूजीसी आसुची विजिट पे तार यूजीसी जो तार पठाउची नाक टीम को कोन पे पठाए तार से तार असेस करे तार असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन करे ता कॉलेज मानकर तो आमे जदि यूजीसी कथा कहबा यूजीसी गोटे गोटे कॉलेज या गोटे गोटे यूनिवर्सिटी रे कोन पे यूजीसी थाए हैला तो से फर्स्ट आमे देखिबा ना मेंटेन एंड कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन यूजीसी रो फर्स्ट रोल होची कि से तार जो हायर एजुकेशन सिस्टम अछि ताको केमिति से मेंटेन करिवो एंड कोऑर्डिनेट गोटे कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड्स मींस तार पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज अछि ताको केमिति से फॉलो करिवो एंड ताको मेंटेन करिके रखिवो ओके देन प्रोवाइड ग्रांट्स एंड फंडिंग सपोर्ट्स टू यूनिवर्सिटीज आमे जदि देखिबा कि जदि नैक पाई जाउची ए प्लस पाई गेला गोटे यूनिवर्सिटी ए प्लस पाई जाउची ए प्लस पाई गेले कोन होची ना ताको यूजीसी बहुत माने बहुत परिमाण रे ताको ग्रांट्स प्रोवाइड करूची हैला फंडिंग सपोर्ट करूची तार तो बहुत जिंस थाए तांकरो कि माने जदि ए प्लस पाइबो नैक जदि ए प्लस पाउची तो बहुत सारा तांकर बेनिफिट थाए ओके डेवलप एकेडमिक गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज फॉर करिकुलम रिफॉर्म्स देखो तार मेनली तीनटा जिनस रोचे गोटे होची कि से तार एकेडमिक जोटा अछि हायर एजुकेशन रो एकेडमिक को मेंटेन एंड कोऑर्डिनेट करके रखिबो देन तापरे होची प्रोवाइड ग्रांट एंड फंडिंग सपोर्ट टू यूनिवर्सिटीज देन नेक्स्ट होची डेवलप एकेडमिक गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज करिकुलम रिफॉर्म्स आज पर्यंत हमर जहाँ भी किछि ना किछि पॉलिसीज रिफॉर्म्स होची करिकुलम रिफॉर्म्स होची सेटा कहा माध्यम रे होची यूजीसी माध्यम रे होची यूजीसी सब क्षेत्र रे से तार करिकुलम को कोन करूची ना डेवलप करूची ताको रिफॉर्म करूची हैला एकेडमिक गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज तो मैं आगे देखिथिबो कि माने जते बेले हमें एबे रिसेंटली न्यूज़ टा हेची कोन ना एनटीए कंडक्ट करूची पीएचडी एंट्रेंस ओके आगे से सिस्टम टा नथिला आगे कोन होतला ना जे जार यूनिवर्सिटी के जे जार कॉलेज जो पीएचडी रोथला सेठी से माने कंडक्ट करथले एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करथले किंतु वर्तमान कोन हैला ना जो गाइडलाइन सब बाहर होची ताको जो रिफॉर्म होची करिकुलम रिफॉर्म्स होची सेरा सब के करूची ने यूजीसी करूची ओके डेवलप एकेडमिक गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज फॉर करिकुलम रिफॉर्म्स अदर इंपोर्टेंट रेगुलेटरी बॉडीज इंक्लूड अंडर देखिबा हमें कोन ना ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जोटा कि हमें कहूचे एआईसीटीई से कोन करूची ना इथरे ना ओवरसीज इंजीनियरिंग जते हमर इंजीनियरिंग कॉलेजेस अछि मैनेजमेंट कॉलेजेस देन टेक्निकल एजुकेशन को से देखुचे देन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जदि हमें कहबा एनसीटीई रेगुलेट्स टीचर एजुकेशन जेमति कि हम ओडिसा रे जो 14 टा ट्रेनिंग कॉलेज अछि ताको के रेगुलेट्स करछि ना एनसीटीई एटा जदि हमें कहबा एनसीटी को माने जदि रेगुलेट करूची ताको ना टीचर एजुकेशन देन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जोटे एमसीआई रेगुलेट्स मेडिकल एजुकेशन एटा केवल मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट किए करछि ना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देन नेक्स्ट हम देखिबा फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन हमर कोन कोन फंडिंग एंड फाइनेंसिंग अछि हायर एजुकेशन रे ना हायर एजुकेशन इन इंडिया इज प्राइमरली फंडेड थ्रू
हायर एजुकेशन प्राइमरली फंडेड बाय यूजीसी। ओके, हायर एजुकेशन को पैसा किए दिए? यूजीसी ही दिए, गवर्नमेंट दिए, किंतु यूजीसी भी गोटे आम जो देखा ସେଇଟା भी गोटे गवर्नमेंट है। यूजीसी प्रोवाइड करे स्टेट गवर्नमेंट को एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ग्रांट्स प्रोवाइडेड बाय द यूजीसी, state government and central government ministry. Then student fees limited due to government regulation on fee structure. Then private donation and industry support. माने ए हायर एजुकेशन फंडिंग एंड फाइनेंसिंग सिस्टम मींस कोड कोड पैसा आसुचे हायर एजुकेशन को हैला। फर्स्ट हैला गवर्नमेंट ग्रांट्स जोटा कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैला, सेटा गोटे रहिला पॉइंट। देन स्टूडेंट फीस आ कोड कोड पैसा आसे हायर एजुकेशन को जो माने कि स्टूडेंट फी पे करती, लिमिटेड ड्यू टू गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन फी स्ट्रक्चर। स्टूडेंट माने भी फी पे करती है, सेटा भी जाए हायर एजुकेशन को जाए। देन प्राइवेट डोनेशन एंड इंडस्ट्री सपोर्ट, बहुत सारा प्राइवेट डोनेशन भी अच्छा, बहुत सारा इंडस्ट्री सपोर्ट भी अच्छा, जो मैंने कि जमती जिंदल हो गला, नालको हो गला हैला। एमान कथा भी कहि परिबा कि एमाने भी किछि ना किछि हायर एजुकेशन को डोनेट करती पैसा। ओके, देन चैलेंजेस इन फंडिंग, कौन कौन चैलेंजेस हमें देखू फंडिंग रे ना? यूनिवर्सिटीज लैक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यूनिवर्सिटीज मानकर माने बहुत सारा रोचे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी लैक रोचे। देन बजट एलोकेशन आर ऑफन इनसफिशिएंट टू मीट राइजिंग कॉस्ट। देन प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इज लिमिटेड, देन अफेक्टिंग द स्कोप फॉर इनोवेशन। तापर हमें देखिबा कि तांकर कोन कोन एग्जामिनेशन सिस्टम कोन अछि आ तार इंपैक्ट कोन हमको पकोचे। The examination system remains a major concern in Indian higher education system. First, देखिबा issues with the current examination system. Encourages rote learning rather than conceptual understanding. देखो जो यहाँ पे देखिए करंट एग्जामिनेशन सिस्टम रे इश्यूज फर्स्ट हो जी एनकरेजेस रोट लर्निंग रादर देन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आगे कौन होता ना बेसी रोट लर्निंग को एनकरेजेस कराउथला। रोट लर्निंग माने कौन? किए कहबो रोट लर्निंग माने? Encourages rote learning rather than conceptual understanding. conceptual understanding माने जो रोट लर्निंग होची जोटा कि आमे घोसी के मन रखुचे हैला, सेटा को आमे कहबा रोट लर्निंग रादर देन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आमे जो जिंसटा को भले से न पढ़ी कि न बुझी कि माने कांसेप्ट को बुझी ने भले से न बुझी खाली घोसी देछे हैला, तो सेटा को आमे कहबा कोन ना रोट लर्निंग। अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड एकेडमिक डिसऑनेस्टी आर कॉमन, जोटा कि हमर अनफेयर प्रैक्टिसेस रोज बहुत सारा हमर पॉलिटिकल प्रेशर रोची, सोशल प्रेशर रोची, जहा फल रे कि हमर अनफेयर प्रैक्टिसेस क्रिएट होची। देन एकेडमिक डिसऑनेस्टी भी होची। एग्जांपल जदि हमें एठी कहबा कि गोटे एमएलए रो पुओ छे, से पूरा माने भलो से पाठ पढुनी कि किछि नै, किंतु देखिला बेलू को से तारो नाटा टॉप लिस्ट रे आसी छे। ओके, तो ये कौन होची ना गोटे अनफेयर प्रैक्टिसेस एकेडमिक डिसऑनेस्टी होची। से कौन हो ना सेठी तांको प्रेशर पड़िथिबो, पॉलिटिकल प्रेशर हैला, सोशल प्रेशर हैला, सेटा पड़िथिबो, सेठी पे सेठी अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड एकेडमिक डिसऑनेस्टी क्रिएट हैला। देन डिले इन रिजल्ट डिक्लेरेशन अफेक्ट्स स्टूडेंट कैरियर प्रोस्पेक्ट। तापर देखिबा कोन जदि हम रिजल्ट रे हमर डिले होची ताले कोन हैला ना स्टूडेंट रो कैरियर प्रोस्पेक्ट रे भी तार इफेक्ट पड़ुची। मन कर ए वर्ष तुम एटा मास्टर्स करछो, मास्टर्स रे ए वर्ष तुमरो 2 इयर्स कंप्लीट हे जाउची। ओके, जदि तुम रिजल्ट जदि ए वर्ष न डिक्लेयर होची, आरो वर्ष 2026 रे डिक्लेयर होची, तो तुमरो 1 ईयर तुमरो कोन होची, तुमरो जोटा कैरियर प्रोग्रेस टा सेटा तुमरो डिक्लाइन होची 1 ईयर, जा फल रे कि तुमरो सेटा कैरियर प्रोस्पेक्ट रे इफेक्ट करूची।
तापर एबे देखिबा कोन सजेस्टेड रिफॉर्म्स हमें आनी परिबा हमर एग्जामिनेशन सिस्टम रे केमिति हमर एग्जामिनेशन सिस्टम टाको हमें स्ट्रांग करि परिबा देखो होची अडॉप्शन ऑफ कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट सेथिपे तमे देखिथिबो प्रायतः +3 लेवल रे इंटरनल असेसमेंट करा जाय पिला मानको स्कूल मानकर भी करा होची किंतु हमें वर्तमान हायर एजुकेशन सिस्टम पढुचे तो हमें केवल हायर एजुकेशन कथा देखिबा ला तो अडॉप्शन ऑफ कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट देन इंट्रोडक्शन ऑफ ए क्रेडिट बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम जोटा कि तुम मानकर +3 लेवल मास्टर्स लेवल रे भी सेटा होची चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम then decentralization of examination process to colleges. Some universities have implemented semester system and grading patterns, but large scale adoption remain a challenge. एबे केते इयर्स हबो जोटा कि हमरो कॉलेज मानकरे आगे गवर्नमेंट कॉलेजेस मानकरे सेमेस्टर सिस्टम नथिला केवल सेटा कोड थिला ना ऑटोनोमस कॉलेज मानकरे केवल सेमेस्टर सिस्टम थिला तांकर प्रति सेमेस्टर को सिलेबस भी चेंज हुए तांकर ग्रेडिंग पैटर्न्स अलगा थिला तांकर मार्क्स भी टिके अधिक थाए तो एमिति बहुत सारा जिंस थिला जोटा कि वर्तमान सेटा चेंज हे जायछि एबे सब कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज रे तो आगे रहुछि सेमेस्टर सिस्टम किंतु कॉलेजेस मानकर नथिला तो सम यूनिवर्सिटीज हैव इम्प्लीमेंटेड सेमेस्टर सिस्टम एंड ग्रेडिंग पैटर्न्स बट लार्ज स्केल अडॉप्शन रिमेन ए चैलेंज तापर हमें देखिबा व्हाट आर द चैलेंजेस इन हायर एजुकेशन को चैलेंजेस या इश्यूज या प्रॉब्लम्स फैक्टर्स हायर एजुकेशन फेस करूची डिस्पाइट इट्स एक्सपेंशन Indian higher education faces several challenges. Different kinds of challenges से face करे कौन फर्स्ट हो जाए हमें देखिबा क्वालिटी एंड रिलेवेंस फर्स्ट से क्वालिटी एंड रिलेवेंस रे चैलेंज फेस करूची कौन मेनी इंस्टीट्यूशंस सफर फ्रॉम आउटडेटेड करिकुला and a lack of practical exposure. There is a disconnect between academic learning and industry need. फर्स्ट आम देखा कौन ता क्वालिटी ना बहुत सारा इंस्टीट्यूशन एबे भी आउटडेटेड करिकुलर से अच्छा लैक ऑफ प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस एजाए चली देयर इज ए डिस्कनेक्ट बिटवीन एकेडमिक लर्निंग एंड इंडस्ट्री नीड्स से देखुना कि वर्तमान प्रेजेंट नीड्स कौन अच्छी इंडस्ट्री नीड्स कौन अच्छी जोटा कि आम पिला पाठ या टीचिंग दबा एकेडमिक लर्निंग आम दबा तो देयर इज ए डिस्कनेक्ट बिटवीन देयर इज ए गैप बिटवीन academic learning and industry needs. Then next हम देखिबो financial constraint एटा तो financial constraint होची सबुठो most important challenges हमें जेकोनसी गोटे education system रे जदि हमें देखिबा तो financial problem तो arise होची so universities depend heavily on state and central government funding यूनिवर्सिटी डिपेंड करुछि कहा उपरे ना स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग उपरे द फंडिंग मेकानिज्म सफर्स फ्रॉम डिले ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ओके जदि हमें देखिबा फंडिंग सिस्टम टे केमिति से सफर होछि ना डिले भी होछि मने करो तुमे गोटे जिंस करिकि गोटे प्रपोजल टे पठेइचो स्टेट गवर्नमेंट को कि यूनिवर्सिटीज को पठेइचो कि से जे आसुनी कोन पे ने ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज अछि तांका पाखरे सेतिकी एफिशिएंट नॉलेज नाही तमरो जोटा प्रपोजल अछि ता प्रति लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी देन हमें नेक्स्ट देखिबा एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन सिस्टम हमरो हायर एजुकेशन रे केमिति एजुकेशन एंड इवैल्यूएशन सिस्टम ता हबा दरकार द सिस्टम इज लार्जली रोट लर्निंग बेस्ड एंड डज नॉट फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग आगे कोन थिला ना आगे जेतबे सिस्टम हमरा हायर एजुकेशन कथा देखिबा कि जदि पिला रोट लर्निंग रोट मेमोराइजेशन करिवो से सब पूरा घोषिबो ताहले तार जोटे क्रिटिकल थिंकिंग सेटा तार डेवलप हबो नाही तो सेठी पई एनईपी 2020 सेठी पे क्रिटिकल थिंकिंग को बेसी इंपोर्टेंस देछि जोटा कि हमर 21st सेंचुरी स्किल रे गोटे क्रिटिकल थिंकिंग अछि हमर 4C अछि 21st सेंचुरी स्किल जोटा हम कहै एनईपी 2020 फोकस करछि गोटे होछि हमर क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन ओके
then unethical practices such as paper leaks and unfair means then undermine the credibility of examination. जो देखिबो बहुत सारा हमरो जते बेले भी किछि एंट्रेंस एग्जाम वगैरह हुए तो सेथिरे कोन ना अनएथिकल प्रैक्टिसेस हुए, बहुत सारा अनएथिकल प्रैक्टिसेस चले कोन ना पेपर लीक कर दियंती. ओके, नेक्स्ट हम देखिबा रिसर्च एंड इनोवेशन डेफिसिट. जोटा हमर रिसर्च एंड इनोवेशन अछि तारे भी बहुत सारा प्रॉब्लम से मैंने फेस करंती. कोन ना इंडिया प्रोड्यूसेस ए लार्ज नंबर ऑफ पीएचडी. इंडिया सबुबले लार्ज नंबर ऑफ पीएचडी प्रोड्यूस करे बट क्वालिटी रिसर्च एंड इनोवेशन रिमेन लिमिटेड. एमती भी अच्छी कि गोटे गोटे यूनिवर्सिटीज मानकर कौन करती ना पैसा देकी पीएचडी कर दियंती. जे से तो डिग्री पाई गले किंतु क्वालिटी रिसर्च तांके पाखरे नाही. क्वालिटी रिसर्च एंड इनोवेशन जोटा अच्छी रिमेन लिमिटेड. तापर होची इनसफिशिएंट इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन लीड टू मिनिमल अप्लाइड रिसर्च. जहाँ भी किसी से मैंने रिसर्च कले से गुडा को कौन करा दरकार ना इंडस्ट्री एंड एकेडमिया कोलैबोरेशन करबा दरकार हैला से मैंने अप्लाइड करबा दरकार से रिसर्च गुडा को. देन नेक्स्ट होची फैकल्टी शॉर्टेज एंड टीचिंग क्वालिटी. फैकल्टी शॉर्टेज भी हमर सब बेले रोज एटा तो तुम्हें निजे भी फील करि पारुथबो कि हम ओडिसा गवर्नमेंट रे भी सब बेले फैकल्टी शॉर्टेज अछि. केवल इंडिया माने हम जदी ओडिसा को छाडी के अलगा को कंट्री को सॉरी कंट्री को अलगा स्टेट को कहबा हम ओडिसा रे ही सेटा आगे अछि. फैकल्टी शॉर्टेज एंड टीचिंग क्वालिटी हैला फंडिंग लैक ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हम ओडिसा रे ही अछि. तो फैकल्टी शॉर्टेज एंड टीचिंग क्वालिटी होची कोन ना मेनी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस फेस सीवियर फैकल्टी शॉर्टेज. बहुत सारा कॉलेजेस हायर एजुकेशन कथा जते बेले हम देखिबा स्कूल माने करे तो वर्तमान चली 5-6 वर्ष होला कोविड पीरियड टू ए जाए चली कोन ना सांको दे दोची टाइमली तांको अपॉइंटमेंट दे दोची किछि प्रॉब्लम नाही. किंतु जदि हमें यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस कथा कहबा तो सेठी कौन हुए ना फैकल्टी शॉर्टेज रहे. सब बेले फैकल्टी शॉर्टेज रहे सेठी कौन हुए ना गेस्ट फैकल्टीज अपॉइंटमेंट करिकि पिला मानको पाठ पढा जाय. The lack of teacher training programs impact the overall quality of instruction. Lack of teacher training programs भी रहे. जेमती कि जदि जनक पाखरे जहाँ जहाँ टीचर्स रो ट्रेनिंग थिबा दरकार ताकू से माने न देखि कि से माने डायरेक्ट कोन करंती गेस्ट फैकल्टीज मानन को रखि दियंती. से माने पाखरे एक्सपीरियंस थाई पारे न थाई पारे हैला ए सब जिंस को से माने देखिबा कथा जोटा कि देखु नाहंती. द लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंपैक्ट द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन. जदि टीचर्स मानन के पाखरे सेतिके ट्रेनिंग रो कैपेसिटी नाही, ट्रेन टीचर नाहंती, एफिशिएंट नाहंती तो से माने कोन करिवे ना तांकर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन भी सेते इफेक्टिव हबो नाही. देन एक्सेस एंड इक्विटी इश्यूज जोटा कि हमर एबे भी सेटा चली छी हैला कोन ना डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट बिटवीन अर्बन एंड रूरल एजुकेशन सिस्टम. वर्तमान भी हमर कोन होछि ना अर्बन एंड रूरल एजुकेशन इंस्टीट्यूट को नेके डिस्पैरिटीज चली छी. Marginalized groups, women and economically weaker section often faces barriers to higher education. जो माने marginalized group रो अछंती एससी एसटीज अछंती women माने हे गले तापरे economically weaker section माने हेले माने ए जे भी से माने कोन करंती ना barrier से माने problem face करंती higher education को. तापरे हम देखिबा फ्यूचर पर्सपेक्टिव एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन. कौन फ्यूचर पर्सपेक्टिव अच्छी हमर एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन कौन अच्छी ना फर्स्ट होची द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एंड सब्सिक्वेंट रिफॉर्म हैव एम्फसाइज्ड सेवरल की इनिशिएटिव फॉर इंप्रूविंग हायर एजुकेशन. ओके, तो हमें जब देखिबा कि एनईपी एनपीई जोटा अच्छी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 से कौन रिफॉर्म करची सेवरल की इनिशिएटिव से इंप्रूविंग माने एम्फसाइज करिची फॉर इंप्रूविंग हायर एजुकेशन. फर्स्ट होची एनकरेजिंग ऑटोनॉमी इन इंस्टीट्यूशन. फर्स्ट से कहला कोन ना हमरो इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी आनिबा पाई
ऑटोनोमस कॉलेज विथ इंडिपेंडेंट करिकुलम एंड असेसमेंट मेथड जोटा कि मो प्रीवियसली तुम मानक गोटे एग्जांपल कही कि आगे गवर्नमेंट कॉलेज मानक जोटा प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज मानक कौन थिला ना तांकर ऑटोनोमस सिस्टम नथिला ऑटोनोमस सिस्टम केवल ऑटोनोमस कॉलेज रे ही थिला तांकर इंडिपेंडेंट करिकुलम अछि तांकर असेसमेंट मेथड भी अलगा थिला तापर होची डिसेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी गवर्नेंस डिसेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी गवर्नेंस मीन्स केवल यूनिवर्सिटी रो जहाँ भी पावर अच्छी सेटा केवल जी हमर जो भिसी अछंती यूनिवर्सिटी रे भिसी रहिबे फर्स्ट तो तांको हातरे तो थिबो सब पावर तांको हातरे अछि किंतु से कोन करिवे डिसेंट्रलाइज करदेबे मीन्स से पावर को कौन करे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू द सबऑर्डिनेट्स जे जे तांको तळे अछंती भिसी थिबे भिसी तळे तांकर आउ जदि जिके अछंती तांको देबे नले कंट्रोलर को देबे जे जेमते जदि मो कॉलेज रो एग्जांपल नेबी कॉलेज लेवल रे हमर प्रिंसिपल थांती प्रिंसिपल तापर प्रिंसिपल तळे हम जदि देखिबा कि किए जदि रीडर अछंती रीडर को से पावरटा देबे तापर जदि हम देखिबा कि एचओडी अछंती तापर तांको देबे तापर जदि तांको तळ लेवल रे जे अछंती तांको तळ लेवल रे जदि को टीचर्स अछि तांको दिया जीवो हला तो एमिति कोन करिवे ना सेटा को से भाग भाग कर देबे डिसेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी गवर्नेंस ओके जेमती कि हमर कोन हेची हम एमएचआरडी जोटा एमओयू मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी हला जोटा हमर सॉरी एमओई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जोटा एमएचआरडी हमर जदि सेटा को हम गोटे एग्जांपल नंबर से होचंती मेन पार्ट मेन बॉडी हमर एजुकेशन सिस्टम रो से भाग भाग जोटा जहा को करूछंती से कोन कले सेंट्रलाइज रे केते गुडा माने तांका पावर को देले केते गुडा पावर हमर स्टेट गवर्नमेंट को से डिस्ट्रीब्यूट कले ओके तो डिसेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी गवर्नेंस जहा को जो दायित्व दरकार से दायित्व गुडा को से माने डिस्ट्रीब्यूट करदेबे जदि से दायित्व डिस्ट्रीब्यूट न करिके भिसी को जदि दिया गला से दायित्व पूरा भिसी ही तो सब जिंस संभाली परिबन ना से तो निजे सब इंस्टीट्यूट जाय कि बुली परिबनी कॉलेजेस जाय कि बुली परिबनी मॉनिटरिंग सुपरविजन करि परिबनी से ही निजे जाय कि एग्जाम कंडक्ट करि परिबनी से एका जाय कि सब खाता गुडा भी से निजे देखि परिबनी तापरे जो हम रिजल्ट बाहर डेटा एंट्री करिबा रिजल्ट रो डेटा एंट्री करे से तो निजे करि परिबनी तो तार जो पावर गुडी को अछि से पावर को कोन करिबो ना से डिसेंट्रलाइज कर दबो ओके बुझा पड़छ समस्त को Yes, ma'am. ओके हला तापर होचे इंप्रूविंग क्वालिटी एंड करिकुलम रिफॉर्म्स तापर हला कोन ना हमें जो हमरो करिकुलम अछि करिकुलम रे भी हमको रिफॉर्म आनिबार अछि इंप्रूविंग माने क्वालिटी जानिबार अछि जो करिकुलम टे भी हमरो क्वालिटी हवा दरकार एमती नहीं कि नॉर्मली हमें माने कोन ना नॉर्मली हमें जहा परिबा ताहा हमें सिलेबस रे रखि परिबानी ताकू हमको क्वालिटी आनिबा दरकार जहा कि सेटा फ्यूचर रे पिला मानक पई गोटे भलो हबो से माने से जिंसटा को निजे फ्यूचर रे से माने यूज करि परिबे ओके जेमति कि एनईपी 2020 किछु गोटे भाबे कि से भाविला कि 6 क्लास रो पिला मानक वोकेशनल एजुकेशन दिया जिवो वोकेशनल एजुकेशन आफ्टर 8th या 9th क्लास रे पिला मानक दिया जाए कि नहले से मानक 12th प्लस 2 टाइम रे दिया जाउथला किंतु वर्तमान 6 क्लास रो दिया होची ओके तो से सेमती करिकुलम रे रिफॉर्म आनिबा दरकार प्रति वर्ष तो आम करिकुलम चेंज करि परिबानी किंतु चेष्टा करिबा 3 वर्ष रे थरे करिकुलम को आम चेंज करिबा पाई कारण अगर करिकुलम आम चेंज न करूचे ताले कोन होची कि प्रेजेंट डे रे जहा सब प्रेजेंट रे नीड जहा अछि पिला मानकर सेटा से माने केमिति पढिबे तो से जदि से जिंस को आम करिकुलम रे आनिबा देन हमरो क्वालिटी करिकुलम हो तो इंट्रोड्यूस कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलर अलाइन विथ इंडस्ट्री डिमांड्स ओके हमरो इंडस्ट्री डिमांड्स को बेस करके भी हमको करिकुलम तैयारी करबा दरकार देन एम्फसाइज स्किल बेस्ड एजुकेशन एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जहाँ भी किसी आम करूचे स्किल बेस्ड एजुकेशन आम एम्फसाइज करूचे ता सहित हमको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी दरकार तापर होचे स्ट्रेंथनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमको
हमर जो रिसर्च अच्छी रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो अच्छी से सब हमको स्ट्रेंथन करिया पड़ो केमती ना इंक्रीज रिसर्च फंडिंग एंड प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज बहुत सारा हमको रिसर्च फंडिंग हमको इंक्रीज करिया पड़ो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज को भी प्रमोट करिया पड़ो तुम्हें देखि बहुत थरे एड पेपर भी एड बाहर एमती कि यूनिवर्सिटीज मानकर भी आसी थाए प्रपोजल कि आईसीएसएसआर रे को माने जो माइक्रो रिसर्च प्रोजेक्ट करिया को चाहउछंती कि मैक्रो रिसर्च प्रोजेक्ट करिया को चाहउछंती से तांको फंडिंग प्रोवाइड करे हैला एटा कले कोन होबो ना हमर जो हायर एजुकेशन सिस्टम अछि सेटा कोन होबो ना हमर इनक्रीज करिवो एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्गर यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री पार्टनरशिप तापर कहला कि कोन ना एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्गर यूनिवर्सिटी आउ इंडस्ट्री पार्टनरशिप जेमती कि हमर जिंदल सहित आम यूनिवर्सिटी रो जदि भलो लिंक थिबो देन से कोन करे जा भी किछि से फंडिंग प्रोवाइड करि परिबो नालको सहित हला जा भी हमर इंडस्ट्री अछि ता सहित भलो पार्टनरशिप हबा दरकार देन फाइनेंशियल रिफॉर्म एंड सस्टेनेबल फंडिंग कौन कौन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल फंडिंग अच्छे देखिबा ना एनकरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन हायर एजुकेशन ओके जोटा मुझे तुमको कही कि से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सहित एनकरेज करिवो देन इम्प्लीमेंट ऑटोनोमस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इन यूनिवर्सिटी तापर कौन ना जोटा हमर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी सेटा ऑटोनोमस हवा दरकार कि ऑटोनोमी से निजे ही करिवो इम्प्लीमेंट ऑटोनोमस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इन यूनिवर्सिटी माने यूनिवर्सिटी ता फाइनेंशियल मैनेजमेंट से निजे ही करिवो से माने ताको के केही ताको स्ट्रिक्ट करिवेनी जेमती कि आमे जदि कॉलेजेस कथा कहबा कॉलेज को किए गोटे स्ट्रिक्ट करूचे जेमती कि कॉलेज निजे तार जहाँ फाइनेंस अच्छे से जिनस से निजे कर परिबनी कॉलेज पाखरे तो एतिकी फंडिंग रहउनी से फंडिंग गुडा कोठो आनिबो यूनिवर्सिटी रो आनिबो यूनिवर्सिटी फंडिंग कोठो आनिबो ना गवर्नमेंट रो आनिबो ओके तो मे बी से स्टेट गवर्नमेंट हे पारे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हे पारे देन एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स तार हमें देखिबो एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट रिफॉर्म रे तार कोन कोन changes होच्छे shift towards continuous shift towards shift towards continuous internal assessment rather than high stake exam आमे कोन करबा कि हाई स्टेक एग्जाम जोटा अछि सेटा न करी कि आमे तंको कोन करबा ना कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट रखिबा जेमती कि हमरो 100 मार्क्स रो गोटे पेपर रे 100 मार्क्स रो एग्जाम होची से 100 मार्क्स रो एग्जाम हमरो 100 मार्क्स न करी कि आमे कोन करबा ना सेठी 20 मार्क्स या 30 मार्क्स रो इंटरनल असेसमेंट करतो जहा फल कि पिला कोन करे 30 रो किछि ना किछि से भलो मार्क्स निहाती भाबरे रखिबो जदि आमे टोटल 100 मार्क्स रो ताकू एग्जाम करबा तो से 100 रू तो से पूरा 100 रू कोन करिवो ना से जेतिकी इंटरनल आउ तार एक्सटर्नल मिसे कि जेतिकी रहे सेतिकी तार रहिबोनी ओके जदि आमे इंटरनल रे ताकू 30 मार्क्स रो करूचे प्राय से 27 25 रो अभव से पाइबो मार्क्स हला एपटे 25 पाई गला बाकी रहला 70 मार्क्स रो जते बेले एक्सटर्नल एग्जाम कलु 70 रो से 50 कि 60 पाइला ओके तो एमती हेले तार केते हे गेला 85 89 मार्क्स तार हे गेला कि 90 भी धरो तार हे गेला जदि हमें असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट को इंक्लूड करूचे जदि हमें असेसमेंट सिस्टम को छाड़ी दबा छाड़ी कि डायरेक्ट हमें एग्जाम करबा 100 मार्क्स रो से केबे भी 90 मार्क्स आनी परिबो नाही मु स्कूल कथा कहूनी तुम मैंने पुणी कहब कि मैडम कौन एमती कहले क्या स्कूल रे तो प्राय तो समस्त रखुं 98 रखुं 99 रखुं एटा स्कूल लेवल रो किंतु आमे जदि हायर एजुकेशन कथा कहबा कॉलेज लेवल रे तो एटा टिके आम पे टिके डिफिकल्टी हुए 95 96 98 एमती रखिया पे हां 95 96 केमिति रखंती जोथरे प्रैक्टिकल थे सेथि पे कहला कंटीन्यूअस इंटरनल असेसमेंट ओके इंट्रोड्यूस ऑनलाइन इवैल्यूएशन सिस्टम्स टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी हमको ऑनलाइन इवैल्यूएशन सिस्टम भी हमें रखिबा जोटे कि हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करि पारिबा ओके तापर देखिबा एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल एंड डिस्टेंस एजुकेशन हमें बहुत सारा हमें हमर जो डिजिटल डिस्टेंस ओपन लर्निंग सिस्टम अछि ताको भी हमें केमिति एक्सपेंड करिबा strengthen open universities and massive online course से बहुत सारा
ओके तो एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल एंड डिस्टेंस एजुकेशन है ओपन यूनिवर्सिटी है जोटा कि इग्नो हो गला तापरे डीडीसी केते गुडा यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन सेटा है तापरे 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 सेठू एनआईओएस हो गला सेटा भी हमें कहि परिबा मैसिव ऑनलाइन कोर्स केते गुडा कोर्स गुडी को मूक जोटा कि स्वयं स्वयं सहित से माने कोऑर्डिनेट करिकि करूछंती सेथरे भी तुमे करि परिबो एडमिशन नै परिबो रजिस्टर करिकि भी तुमे सेथरे क्लास करि परिबो सेटा को भी से माने काउंट करंती एजुकेशनल सर्टिफिकेट रे भी तुमे के करियर रे भी सेटा काउंट हबो तापरे सेठू सेथरे भी एग्जाम सिस्टम थाए मूक एंड स्वयं रे तुम्हें से फॉर्म फिलअप करो जोटा कि एनटीए कंडक्ट करे ओके देन नेक्स्ट हम देखिबा इन्वेस्ट इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आम जेतिके हे पारे आमे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आमे इन्वेस्ट करबा एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पई ओके जोटा कि आमर एबे देखिबा कि आमर जो एबे वर्तमान जो क्लास ता चली ची एटा हो जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ओके कहना गोटे जदि देखिबा कि आमे डिस्टेंस एजुकेशन रे सब पिला को एकाठी करिकी गोटे क्लासरूम ट्रेडिशनल क्लासरूम में पाठ पढ़ाइबाटा बहुत कौन हुए ना डिफिकल्ट हुए कौन पे जड़े पिला कौन पे से डिस्टेंस एजुकेशन रे एडमिशन ओके मे बी फर्स्ट आम देखा कि तार मे बी ताको टाइम मिल न पारे जोटा रेगुलर कोर्स रे से पढ़िया पाए एज भी अफेक्ट करे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी तार हे थाई पारे ओके तो या तो तार पाठ पढ़ियार इच्छा अच्छी तार फैमिली बैकग्राउंड ताको सपोर्ट करू नाहांती सेटा भी हे पारे जोटा कि से रेगुलर क्लास करि पारेनी सेथि पे से कोन करे ना डिस्टेंस एजुकेशन चूज करछ ओके फैकल्टी डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग कि आउ भी देखिबा जदि से माने आउ कोठी चाकरी करछंती चाकरी तांको परमिशन मिलुनी सेथि पे से माने डिस्टेंस रे भी से माने कोर्स करछंती जदि हमको डिस्टेंस रे करिकि सेम इक्विवेलेंट हमें पाई पारुचे रेगुलर रे जहा इक्विवेलेंसी अछि डिस्टेंस रे भी सेम इक्विवेलेंस जदि पाई परछे तो काहे कि हमें डिस्टेंस को कोन पे इंपोर्टेंस न दबा ओके फैकल्टी डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग establish faculty development centers to improve teaching methodologies देखो टीचर्स माने हायर एजुकेशन रे जो लेक्चरर्स असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रीडर जो माने अछंती से माने सब प्रति वर्ष निजर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को जानती कि से माने जॉइन करती किछि गुडा से माने रिफ्रेशर कोर्स हे गला ओरिएंटेशन प्रोग्राम हैला इंडक्शन प्रोग्राम हैला डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स so then improve teaching methodologies that means किछि को कुआडे जाय कि टॉक दबा रिसोर्स पर्सन हिसाब रे कि किछि लेक्चर्स दबा कि पेपर पब्लिकेशन करबा इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस सेमिनार रे निजर पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करबा ए सब जिंस कोन कले कोन हबा ना टीचर्स रो जो हमर फैकल्टीज अछने तांकर टीचिंग मेथोडोलॉजी इंप्रूव हबा देन नेक्स्ट होची एनकरेज रिसर्च इंसेंटिव फॉर यूनिवर्सिटी टीचर्स यूनिवर्सिटी टीचर्स मानन को रिसर्च इंसेंटिव दबा दरकार ओके इंसेंटिव मींस जदि हमें जनरली हमें कहबा इंसेंटिव मींस कोन ना बोनस तो सेमते जो टीचर्स माने यूनिवर्सिटी लेवल रे जदि अधिक से माने रिसर्च करि छथि से हिसाब रे तांको रिसर्च इंसेंटिव दबा दरकार तांको इंक्रीमेंट दबा दरकार तापर हम देखिबा conclusion कौन है ना India's higher education system has undergone significant expansion since independence yet it continues to face challenges in quality जदि हमें देखिबा कि इंडिपेंडेंस जाए हमर कोन कोन सब प्रॉब्लम हमें फेस करूचे ना गोटे होची क्वालिटी हमें फेस करूचे एक्सेसिबिलिटी सेटा भी हमें फेस करूचे फंडिंग एंड गवर्नेंस देखो तुम्हें भी निजे फेस करि पारुथबो कि जेते बेले ओडिसा गवर्नमेंट रे गवर्नेंस चेंज हैला डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स भी फेस करा होचे ओके तो गवर्नेंस आल्सो वन टाइप ऑफ challenges while various policy
initiatives have been introduced. Effective implementation remain key to achieving excellence. ଯେତେବେଳେ ଆମେ various policy को ଯେତେବେଳେ ଆମେ initiative କରିକି introduce କରୁଛେ बहुत सारा effective key points जोटा रहउछि सेटा को आमे अचीव करछे जेमति कि आमे एनईपी 2020 को बहुत जण एजुकेशनिस्ट माने इनिशिएटिव करिकि सेटा को इंट्रोड्यूस कले हबा तोरे ता एनईपी 2020 हेबा द्वारा कोन हैला ना बहुत गुडे जिंस हमरो अचीव हे पारुछि हला हम एजुकेशन सिस्टम रे बहुत गुडे जिंस रिफॉर्म हे पारुछि मुविंग फॉरवर्ड जोटा कि जेमती कि फॉर एग्जांपल मु कहिबी जेते बेले गोटे पिलाटे +3 पढुथला ताको 3 वर्ष से जेपन तो कंप्लीट न करछि ताको सर्टिफिकेट मिलिबोनी ओके किंतु वर्तमान से कोन करिवो जदि से गोटे वर्ष करछि +3 फर्स्ट ईयर ताको केवल सर्टिफिकेट मिलेला 2 वर्ष कंप्लीट कला डिप्लोमा मिलला 3 वर्ष कले डिग्री सर्टिफिकेट ताको मिलिबो ठीक अछि जदि से फर्स्ट ईयर आगे कोन होतला ना जेते बेले से फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर सारछि मे बी तार चाकरी हे गेला कि तो कोन ओटे तार फैमिली प्रॉब्लम्स हैला कि जहां भी किछि इश्यूज हैला से छाडी देला तार पुणी केते वर्ष पर इच्छा हैला कि आउथरे जाई पढिया पे से कोन करिवो ना पुणी आउथरे आसी कि +3 एडमिशन करिवो पुणी से स्टार्टिंग रु पढिवो किंतु एनईपी 2020 कोन करछि ना ना जदि पिला गोटे +3 फर्स्ट ईयर पढिछि ताहले ताको सर्टिफिकेट कोर्स बोली ताको कहि कि ताको गोटे प्रोवाइड करा जिवो सर्टिफिकेट गोटे प्रोवाइड करा जिवो हैला तापरे से जिवो 3-4 वर्ष पर पुणी आसिकी से जोट पाठ छाडिथिला सेठो आउथरे से एडमिशन करिकी तार कंटिन्यू से करि पारिबो ओके तो देन मूविंग फॉरवर्ड integrating technology research innovation and skill based learning will be crucial in shaping a robust and globally competitive higher education system जदि आमे देखिबा कि हमर को आहुरी कोन कोन हमर ता भितरे रहउची इंक्लूड ना इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी रहउची जेमति कि हमर वर्तमान एआई हे गलानी सब जिंस रे एआई चैट जीपीटी ओके तो इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड स्किल बेस्ड लर्निंग will be crucial in shaping a robust and globally competitive higher education system. So this is all about your unit 1. Now we will discuss about the unit 2. ओके तो यूनिट 2 पे मो पीपीटी करी नाही मो सेमती तुम मानन को कहि देबी ठीक अछि विजिबल होची ना Yes, ma'am. ओके यूनिट मो यूनिट 2 पे पीपीटी करिनी जेहेतु एटा मोर फर्स्ट क्लास तो मु भाबिली कि मे बी टाइम न बळी न पारे सेति में करनथले तो एथरो हमें जहा टिके टिके हम डिस्कस कर देबा ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रो पीपीटी कर देब ओके Yes, तो ma'am. Yes. हां हमें देखिले फर्स्ट हमें पढ़िले प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया माने केमिति हमें प्लान कोले केमिति मैनेज कोले हला ए सब जिंस हम पढ़िले यूनिट 1 रे यूनिट 2 रे हमें देखिबा स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया माने कोन स्ट्रक्चर अछि एंड ऑर्गेनाइजेशन कोन अछि हायर एजुकेशन रे माने तार स्ट्रक्चर सिस्टम कोन अछि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कोन अछि ओके तो हमें देखिबा कि तार लर्निंग आउटकम्स कोन हे पारे तार ऑब्जेक्टिव्स कोन हे पारे ना एक्वाइंट योरसेल्फ विथ द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया तुम्हें मैंने फर्स्ट कोन ना स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे हमरो हायर एजुकेशन सिस्टम ता से तो तुम्हें निजे को एक्वाइंट करबा दरकार फर्स्ट देन सेकंड होचे एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया तापर हम देखिबा कोन तार पैटर्न सिस्टम कोन अछि
आम गोटे हायर एजुकेशन पे गोटे फंडिंग आनिबा तापे फाइनेंसिंग पैटर्न सिस्टम कौन कौन अच्छी then analyze the roles of function of the university grant commission and other agency concerned with higher education जेहेतु आम हायर एजुकेशन पढ़ुचे तो बेसी फोकस कहा यूजीसी यूजीसी सहित अदर एजेन्सी कौन कंसर्न अच्छी हायर एजुकेशन then assess the effectiveness of the administrative style of higher education at the state and institution level जदि आम कह तार एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल ऑफ हायर एजुकेशन कौन अच्छी ना स्टेट लेवल रे कौन अच्छी इंस्टीट्यूशनल लेवल रे कौन अच्छी स्टेट लेवल जदि आम कह ना आमर ओडिशा गवर्नमेंट ता लेवल रे कौन कौन अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल देन इंस्टीट्यूशन लेवल जिते कहबा सेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल रे आसीजिवो क्लस्टर लेवल रे आसीबो तार कौन कौन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल अच्छी ओके तो ये देती हायर एजुकेशन स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन तो ता भितर आम देखा यूनिवर्सिटीज है जोटा कि आम पढ़ी प्रीवियस क्लास रे डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज रोची एठी अच्छी The university established by act of state legislature are funded by respective state governments are referred to as state universities. Okay, जदि आम यूनिवर्सिटी कथा कहबा तो different kinds of universities रोची एठी अछि the deemed to be universities or deemed universities institution or national importance national level universities भी हमरो रोचे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी रोचे स्टेट यूनिवर्सिटीज भी रोचे जदि आम स्टेट यूनिवर्सिटी कथा कहबा एग्जांपल ऑफ एठी कहला कोन रेफर टू एज स्टेट यूनिवर्सिटी तापर एग्जांपल ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैला कोन नाम रसिबो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जोटा वाराणसी रे अछि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तापर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी ए सब सब आसीबो रे कोथे हमरो सेंट्रल यूनिवर्सिटी देन जदि हम डीम टू बी यूनिवर्सिटी कथा कहबा डीम टू बी यूनिवर्सिटी कोन कोन अछि ना डीम्ड यूनिवर्सिटी आर institutions that are deemed to be universities for the purpose of the university grant commission 1956 the deemed university status is conferred by tile Central University on the advice of the University Grant Commission's work of high quality in specialized academic field. Examples are Manipal Academic of Higher Education, Manipal and Tata Institute of Social Science, Mumbai. ये सब जिनस होचे कोन है deemed universities. तापर जदि हम देखिबा institution of national level रे कोन होची ना national importance are institution established by act of parliament that undertake teaching and research in areas that are critical to national development. Okay, so example are the 7 Indian Institute of Technology and Sri Chitra Tribunal Institute for Medical Science and Technology Trivandrum. ये सब जिनस हमर आसीबो कोथरे ना national importance जोटा national institute हमें कहबा then the university alone are empowered to grant degrees and additionally diplomas and certificates या छोड़ा भी university कौन कौन provide करे ना degrees provide करे then additionally diplomas and certificates तापर depending upon the nature of the program other institution can only award fellowship diplomas and certificate the fellowship of Indian Institute of Management जोटा अच्छी हमरा IIM हैला IIM रे कौन हुए ना जनरली इक्वेटेड विथ PhD डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विथ MBA IIM रे केवल कौन से दिया जाए ना PhD डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विथ MBA तापर एठी अछि यूनिटरी यूनिवर्सिटीज जोठी हमें पढ़ी थिले कि तार सिंगल कैंपस थिबो से कैंपस भितरे तांको टीचिंग दिया होथबो सेटा होची unitary universities okay there is a provision for both undergraduate and postgraduate teaching and also for research सेठी तांको तीनटा जको दिया जाउथबो कोन ना graduation undergraduate then postgraduate then research PhD the best example are the Banaras Hindu University University of Hyderabad Pondicherry University ये सब हला जते हमर सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुडा तापरे आसिला हमरो colleges
कौन कौन कॉलेजेस हमर अछि ना द बल्क ऑफ अंडर ग्रेजुएट टीचिंग इज डन इन कॉलेजेस दिस are of two types, the constituent colleges and affiliated colleges. Constituent colleges means what? Also known as conducted colleges are those are established managed by the university. माने कौन माने जोटा कॉलेज ऑलरेडी अच्छी किंतु ताको यूनिवर्सिटी मैनेज करूची सेटा होची कंस्टिट्यूएंट जदि एफिलिएटेड कथा कहबा are those are set up and managed outside the university campus either by the government or by educational ट्रस्ट माने कौन एफिलिएटेड कॉलेज होची कौन माने जेमति कि एटा हैला कौन ना कंस्टिट्यूट कॉलेज होची कि कॉलेज को कंडक्ट करिवो के यूनिवर्सिटी ओके मैनेज भी करिवो यूनिवर्सिटी किंतु एफिलिएटेड कॉलेज होची कि तार सेटअप थिबो मैनेज थिबो किंतु सेटा यूनिवर्सिटी बाहर थिबो यूनिवर्सिटी भितरे नथिबो आइदर बाय द गवर्नमेंट ताकू चलेइबो नहले किछि गोटे एजुकेशनल ट्रस्ट ताकू चलेइबो हैला सेटा होची एफिलिएटेड कॉलेजेस तो most colleges impart education in the liberal art including art science art social science and commerce. However, there are also many professional colleges that impart education in one of the professional discipline like law, medicine, engineering and technology and management. Okay, जेमती कि तुम देखिथिबो बहुत सारा हमर इंजीनियरिंग कॉलेज अछि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कॉलेज अछि मैनेजमेंट कॉलेज अछि बहुत सारा कॉलेजेस अछि किंतु ताकू फंड दबा को गवर्नमेंट ताकू फंड दौनी हैला से कोन करिए सेही स्टूडेंट माननगुठो जहा से माने फी पाइबे किंबा आ को बॉडी सहित तांकर को इंडस्ट्री बॉडी हे गेला के प्राइवेट पार्टनरशिप सहित तांकर कोन लिंक थिबो तांकोठो से माने कोन करिवे ना पैसा आनी कि से माने निजर फैकल्टीज माननकु देबे ओके तापर हम देखिबा मिनिस्ट्री एंड एजेंसी इन हायर एजुकेशन एटा बोधे बहुत पुराना बहिटा जोटा कि चेंज हेनी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एबे तो वर्तमान नाही एमएचआरडी जोटा कि सेटा चेंज हे जाईची मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेटा हेची एटा बोधे समान चेंज करि नाहंती देखिलो तो एठी भी गोटे हम सिस्टम कहि परिबा कि लैक ऑफ जोटा रहउची से माने करिकुलम टाको भी रिफॉर्म करि नाहंती ओके तो आम जानी कि जोटे मिनिस्ट्री ऑफ रोचे डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द मेजर एजेंसी कंसर्न्ड विद द हायर एजुकेशन द मिनिस्ट्री ऑपरेट नॉर्मली थ्रू द यूजीसी से जो हमर मिनिस्ट्री का द्वारा सेटा ऑपरेट होची ना यूजीसी ओके तो या भितर कोन आसीबो ना इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन इज हैंडल्ड बाय ए सेपरेट यूनिट इन द एमएचआरडी एमएचआरडी रो गोटे सेपरेट यूनिट अछि इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ओके जोटा कि सेटा किए करूची सेपरेट यूनिट अछि जोटा कि हम प्रीवियसली पढ़ी थिले हैला यूजीसी अंडर केते गुडा तार माने अछि अलगा से माने ही करंती जोटा कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जोटा कि हमें वर्तमान माने पढ़ी थिले कि हमर टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग मानन को किए हैंडल करछंती ना एआईसीटीई आउ हमर टीचर्स मानन को करूछंती एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ओके तो तापरे होची मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आसिला द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज assumed responsibility of the agricultural education in India all the agriculture university functions under this ministry हमर एग्रीकल्चर जिते अछि हमर टोटल इंडिया रे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज सेटा को भी किए करछंती फंक्शन ministry means ministry of human resource development in agricultural education the ministry operates through the Indian Council of Agricultural Research देखो जोटा एमएचआरडी पाखे एतिके टाइम नहीं जे से निजे सब जिंस को रेगुलेट करिवो सेथि पे से निजो पावर टाको डिस्ट्रीब्यूट कर देछि ओके करिकि जेमति कि मु कहिली ए हमर जोटा टेक्निकल एजुकेशन पे इंजीनियरिंग टेक्निकल पे से एआईसीटी रखिला एग्रीकल्चर पे का को रखिछि आईसीएआर को रखिछि हैला सेमति मिनिस मेडिकल हेल्थ पे का को रखिला ना एमसीआई को सेमति लॉ पे का को रखिछि द बार काउंसिल ऑफ इंडिया जदि हम टीचर कथा कहबा का को रखिछि एनसीटीई ओके तो से तार पावर को कोन करछि डिस्ट्रीब्यूट कर देछि अकॉर्डिंग टू द
need interest of the subordinates. ओके तापर हूँ स्पेशलाइज एजेंसी फॉर प्रमोशन रिसर्च जोटा कि कहूली कि बहुत सारा जिस भी एमती बाहर आईएएसएसआर आईसीएसएसआर रु भी फंडिंग आसूची जी जदि चाहिए सेठी भी से निजर सोशल साइंस जदि रिसर्च करिया चाहूँ सेठी भी से फंड आनी पारिबो द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तापरे आसिला गोटे जदि से हिस्ट्री पई करिया चाहिए ताले इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च तापरे इसरो जोटा स्पेस रे जेकी से माने सब रिसर्च करूछंती स्पेस रिसर्च ओके तो ए सब स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च स्पेशलाइज्ड एजेंसी अछंती कौन कौन एजेंसी अछंती फर्स्ट होची सीएसआईआर गोटे एजेंसी ओके तापरे आईसीएसएसआर गोटे एजेंसी आईसीएचआर आईएसआरओ इसरो ओके ए सब एजेंसी अछंती एमाने भी सब कहा अंडर आसीबे ना हमर आसीबे एमएचआरडी एमएचआरडी तो वर्तमान नाही एमओई अछि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तापर हम देखिबा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स एंड शेड्यूल कौन कौन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स एंड शेड्यूल रहुची फर्स्ट होची एकेडमिक ईयर जोटा कि कौन होची ना इन इंडिया एकेडमिक ईयर यूजुअली बिगिन इन जून और जुलाई एंड्स देखियो प्रायतः एकेडमिक ईयर टा केबे सरुची जून एंड जुलाई सॉरी मुझे भूल कहली बिगिन्स माने स्टार्टिंग होची जून जुलाई रु एंड एंड्स इन मार्च और अप्रैल हमर जेतेबेले एकेडमिक ईयर टाइम में कहबा केतेबेले सरुची ना हमर एई टू द अप्रैल और मार्च लास्ट या अप्रैल लास्ट हमर सरीबो 2025 एकेडमिक ईयर पुणी स्टार्टिंग हबो केतेबेले जून एंड जुलाई 2025 ईयर रु स्टार्टिंग हबो ओके institution located in mountains area about 1 or 2% of total follow a different schedule beginning in March and going on to December एटा तांको यूनिवर्सिटी हिसाब रे सेटा हुए जेमति कि हम जम्मू एंड कश्मीर कथा कहबा सेठी 3 मास छुट्टी रहे ओके डिसेंबर जनवरी फेब्रुआरी तांको 3 मास विंटर वैकेशन रहे तो तांकोर अलगा तांकोर जदि हम देखिबा तांकोर अलगा थाए academic year okay beginning in March and going to on December तो सेटा होइला जदि हमें आसाम नॉर्थ ईस्ट कथा कहबा सेठी भी तांकर सेशन अलगा थाए ओके तो सब सेटा यूनिवर्सिटी ऊपर डिपेंड करे कि केमिति एकेडमिक ईयर रखिबो जदि जनरली हमें कहबा एकेडमिक ईयर टा तो प्रायतः जनरली एमती एकेडमिक ईयर हुए केते बेले ना मार्च अप्रैल रे एंड हुए स्टार्टिंग हुए जून एंड जुलाई रे तापर देखिबा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन in case of the professional course and the subject in science the medium of instruction is almost exclusively English in the arts humanities social science and commerce faculties it is both English and the regional language okay जदि हमें प्रोफेशनल कथा कहबा प्रोफेशनल एंड सब्जेक्ट इन साइंस द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमर कोन हबो ना इंग्लिश हबो इन द आर्ट्स ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस एंड कॉमर्स कथा जदि कहबा तो सेठी हमर कोन हबो ना बाइलिंगुअल हे जाउची इंग्लिश ता सहित ताकर रीजनल लैंग्वेज at the postgraduate level instruction are usually in English and the regional language okay so educational programs सेमती हम देखिबा कोन कोन हमर educational programs रहउची The educational programs generally involve study of a fixed number of courses with little flexibility. A list of bachelor levels, जोटा कि हमें कोचे bachelor level कोचे. In the case of liberal education, a student usually take 4 subjects in the first year, 3 in second year, and 3 in second and 1 honors, and 3 general pass degree in the third. जदि हमें कहबा pass आउ honors कथा हमरो हमरा ऑनर सब्जेक्ट तो आमे गोटे नौचे ता सहित दीटा इलेक्टिव रहउची आउ तापरे हमरो कंपलसरी पेपर रहउची ओके तो से जिनसडा ही से कहिची फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट ऑफ साइंस स्ट्रीम कैन नॉट बी टेकन विद इन दोज ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एक्सेप्शन मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी within the science program it is usually not permissible to take mathematics and physics with botany or zoology. The professional course except medicine follow the semester pattern. However, efforts are under way to accord
ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम एजुकेशनल प्रोग्राम कथा कहला ये से कही कि जो मैंने आर्ट्स साइंस थे से मैंने अलग किसी सब्जेक्ट्स नहीं मैंने केवल आर्ट्स ह्यूमैनिटीज वाला ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स नहीं पारिबे आउ किछि नहीं पारिबे नाही ओके जदि आमे देखिबा आर्ट्स रे भी बहुत जन साइंस मैथ नहीं पढ़ुछंती ज्योग्राफी नहीं पढ़ुछंती किंतु मनकर गोटे साइंस स्टूडेंट अछि ताकू टिके इच्छा हैला से एजुकेशन पाठ पढ़िया पय कि ताकू टिके इच्छा हैला हिस्ट्री पाठ पढ़िया को से केमती कोन करबा तो वर्तमान सेथि पे एनईपी 2020 चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एनईपी 2020 नुहो सेटा यूजीसी करिछि ओके तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी हिसाब रे से माने चूज करि परिबे ओके जने साइंस सब्जेक्ट नहीं थियो ताको इच्छा बा आर्ट्स रे गोटे सब्जेक्ट पढ़िया को तो से आसी के पढ़ी परिबो ओके तो एडमिशन सिस्टम भी तार देछि एटा तापर हम देखिबा फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया को कोठू तार सोर्स ऑफ फंडिंग को कोठू अछि सोर्सेस ऑफ फंडिंग हम देखिबा ना source of funding hela taro the income of university in India is derived from the following sources grants from the central government ru se paibo then grants from the state government ru paibo then contribution from students fees जोटा कि आम प्रिवियसली पढ़ी स्टूडेंट फीस रू भी किसी से मैंने पाइबे एंडोमेंट डोनेशन किसी डोनेशन एंडोमेंट रू भी पाउछन देन फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द डिफरेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी रू भी से मैंने पाउछन ओके तापरे होचे तापरे हम देखिबा टाइप्स ऑफ ग्रांट्स को ग्रांट्स रो पैसा हमको भी मिली पाउछ गवर्नमेंट रू तो गोटे होची मेंटेनेंस और ब्लॉक ग्रांट्स देन नॉन रिकरिंग ग्रांट्स एंड डेवलपमेंट ग्रांट्स मेंटेनेंस एंड ब्लॉक ग्रांट होची कोन दिस ग्रांट्स आर बेसिकली फॉर द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन मींस ए ग्रांट्स गुडी को कोन पे यूज हुए ना हम देखिबा कि इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग पे डे टू डे कोन दरकार अछि salaries of the teaching and non-teaching staff constitute the bulk of the maintenance grant given to university. These grants are determined by the state government for a specific period and in general are subject to increase on account of rise in cost. माने ये जो होची maintenance of block grant पे माने से माने bulk रे specific period पे ही government रो पैसा नहीं आसीबे. Okay. तापर होची नॉन रिकरिंग ग्रांट्स होची कोन दिस ग्रांट्स आर नॉर्मली यूज्ड फॉर नॉन रिकरिंग ग्रांट्स होची कोन ना दिस ग्रांट्स आर नॉर्मली यूजफुल बिल्डिंग इक्विपमेंट केवल बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट पई जोटा में यूज करबा ग्रांट सेटा होची नॉन रिकरिंग ग्रांट्स इन जनरल लैंड फॉर यूनिवर्सिटी इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट तापर होची डेवलपमेंट ग्रांट्स जदि हमें कॉलेज रो डेवलपमेंट कथा चिंता करबा तो से ग्रांट हमें कोठो आनिबा से ग्रांट हमें डेवलपमेंटल ग्रांट होची हमरो यूजीसी जदि यूजीसी हमको ग्रांट न दोची पैसा न दोची देन कोन करबा हमें से कॉलेज या इंस्टीट्यूट को हमें डेवलपमेंट कर परिबा नहीं तार जहा जहा किछि दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर हे गला कि तार टीचर्स मानन को किछि प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम किछि से फंड करिया को चाहूची तो से सब जिंस से करि परिबो नहीं तापर हम देखिबा रोल एंड फंक्शन ऑफ द यूजीसी जोटा कि हम प्रीवियसली पढ़ीचे कि कोन कोन यूजीसी तार रोल एंड फंक्शन कोन कोन अछि ओके एठी हम देखिबा यूजीसी तो हम देखि कि 1956 established हेची तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द मेजर रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द कमीशन आर टूफोल्ड गोटे होची द प्रमोशन कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी education तापर सेकंड वन इज द डिटरमिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन ओके फर्स्ट कोन ना यूनिवर्सिटी एजुकेशन को से केमिति प्रमोट करबा केमिति कोऑर्डिनेट करबा सेकंड वन इज द डिटरमिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग तापर कहला कोन ना हमर जो यूनिवर्सिटीज अछि तारो केमिति स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को मेंटेन करिके रखिबो देन एग्जामिनेशन सिस्टम तार केमिति होबा तार रिसर्च इनोवेशन सिस्टम केमिति होबा ए सब जिंस को से केमिति मेंटेन करबा एंड डिटरमिनेशन करबा ओके तापर एठी से जिंसटा ही देछि तापर हम देखिबा तार कोन कोन फंक्शंस अछि फंक्शंस ऑफ द कमीशन और यूजीसी कोन कोन फंक्शंस अछि तार फर्स्ट फंक्शन हला टू असेस द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूजीसी कोन करिवो ना से तार कोन कोन फाइनेंशियल नीड्स अछि से नीड्स को से फर्स्ट असेस करिवो
ओके तापर होची टू अलोकेट वेरियस फॉर्म्स ऑफ फंड थ्रू ग्रांट्स तापर हैला कोन ना तार जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ ग्रांट्स अछि से ग्रांट्स को से अलोकेट करिवो मींस कोन कॉलेज यूनिवर्सिटी तो पठे दोची पैसा मने कर गोटे यूनिवर्सिटी को यूजीसी पठेला 10 lakhs के 20 lakhs से पठेला तापर से अलोकेट करिवो वेरियस फॉर्म्स मींस से केते पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रे खर्च करिवो केते पैसा गार्डनिंग रे खर्च करिवो केते पैसा से तार बिल्डिंग रेनोवेट रे खर्च करिवो कि ता टीचर्स मानन को सेमिनार कंडक्ट करिवो कि कॉन्फ्रेंस हैला कि ता टीचर मानन को किछि से जोटा ट्रेनिंग प्रोवाइड करिवो कि स्टूडेंट्स मानन को किछि ट्रेनिंग प्रोवाइड करिवो तो एई जो से फंडिंग गुडा को कोठी कोठी से खर्च करिवो टू अलोकेट वेरियस फॉर्म्स ऑफ फंड थ्रू ग्रांट्स ओके नेक्स्ट होची टू एडवाइस एनी अथॉरिटी on the establishment of a new university or the expansion of existing one. However, it may noted in this context that there are instances where the commission is not consulted while establishing the universities at the state level. A new act has been framed in this regard. In such a case, the UGC is prevented from providing to the university assistance for a specific period. तापर से कहला कोन to advise any authority on the establishment of new university or the expansion of existing one से चाहिबो कि आउ किछि नुवा यूनिवर्सिटी करिया को से यूनिवर्सिटी भी से करि परिबो to collect and disseminate information on all matters pertaining to university education in India तापर तार आउ गोटे फंक्शन होची कोन ना सी जहा भी इंफॉर्मेशन से पाउची all matters पाई तो information should collect and disseminate to university education in India to decide on standards and recommend measures necessary to improve university education in India. आउ भी जहाँ किसी हमरो इंडिया रे जिते भी यूनिवर्सिटी अछंती से यूनिवर्सिटी रो कोन करियो पर्टिकुलर कोन कोन नॉर्म्स रहइबो पॉलिसीज रहइबो रूल्स रेगुलेशन रहइबो से जिंस देन कोन कोन रेकमेंड्स रहइबो सब जिंस को से डिसाइड करिवो ओके तापर कहला कि the UGC has introduced various faculty improvement program which provide opportunities to teacher to keep abreast with modern development in their field, undertake research and exchange idea with experts in their subjects area and other related fields. से आउ कहला कि यूजीसी कोन इंट्रोड्यूस करूची ने वेरियस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस करूची व्हिच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज जोटा कि से प्रोवाइड करूची कोन ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करूची टू teachers to keep abreast with modern development in their fields, undertake research and exchange idea माने जहाँ भी तारे किसी आइडिया अच्छी से आइडिया को एक्सचेंज करछु with experts in their subject areas and other related fields. The UGC has also instituted national fellowship केते गुडा से national fellowship भी से provide करछि scheme for national lecturer भी provide करछि visiting professor visiting fellow scheme associateship to provide opportunity for teacher engaged in research to visit and work for short periods in various advanced center or institution. Then next time देखिबा quality assurance कोन कोन quality assurance अछि now the responsibility of quality assurance in higher education lies with the university grants commission and the statutory council like the All India Council for Technical Education जोटा कि हमें कहूचे AICTE. The UGC established in 1994 the National Assessment and Accreditation Council NAC that undertakes institutional evaluation of university and colleges. आम जो colleges and university को evaluate करिया पई 1994 रे UGC गोटे establish कोला NAC हला
से कौन से करुच्ची ना फॉर क्वालिटी एश्योरेंस से कौन चेक करिवो ना कौन केमती तार क्वालिटी अच्छी केमती क्वांटिटी कौन अच्छी टीचर्स मानकर स्ट्रेंथ केते अच्छी सेठी केमिति पाठ पढ़ा होची रिसर्च इनोवेशन केमती होची हैला सब प्रकार जिंस इंफ्रास्ट्रक्चर केमती अच्छी सब जिंस से इवैल्यूएट करछन्ते NAC रे फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जोटा कि कहिछि कि टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन को किए से गाइड करछि ना ऑल AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन सेटअप आल्सो इन 1994 रे से भी सेटअप हेछि तो a national board of accreditation NBA which undertakes programs evaluation the distance education council Indira Gandhi National Open University has the responsibility of monitoring quality in distance education program जिते हमरो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम अछि ताकू के मॉनिटर करिवो ना इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नो ओके जेमते कि मु कहली कि टेक्निकल एजुकेशन को हमरो किए मॉनिटर करछंती AICTE UGC ए सब जिंस UGC अंडर रे जो हमरो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस अछि ताकू के मॉनिटर करछंती NAC ओके तापरे देला कोन ना तापरे कहला कि हमरो डिस्टेंस एजुकेशन को के मॉनिटर करिवे ना इग्नो The Government of India has set up a number of council to monitor professional activity in different professional area. The council also regulate higher education in their respective area. These statutory council are two types. Okay. Those with both funding and regulatory powers relating to education, All India Council for Technical Education, AICTE, Council of Architecture, then Pharmacy Council of India, माने ए सब जेते गुडा ऑर्गेनाइजेशन अच्छंती ए गुडा को सब रेगुलेट करिवे देन इंडिया नर्सिंग काउंसिल बार काउंसिल ऑफ इंडिया डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी Central Council of Indian Medicine, Rehabilitation Council of India, and Veterinary Council of India. Okay. तापर next है कौन तापर administration of higher education at state level. जदि आप state level कथा कहबा कि state level रे हमरा administrative structure केमती अछि there is no uniform pattern of administration of higher education at state level किछि से बने uniform pattern नहीं तारो the administrative structure also varies among state हैला state रो particular गोटे uniform pattern नहीं ओडिशा state government रो गोटे अलगा pattern अछि higher education state level administration रो तेलंगाना रो अलगा अछि कोलकाता रो अलगा अछि मुंबई रो अलगा अछि सॉरी महाराष्ट्र रो अलगा अछि सब स्टेट रो अलगा अलगा अछि ओके The administrative structure also varies among states. Usually, there are three different structures dealing with educational administration at the state level. जदि आमे देखिबा तो तीनिटा तारो structure अछि different structures dealing with educational administration at a state level. There are secretariat, directorate, and inspectorate. Okay, so among these, the former two structures are important so far as higher education is concerned. First, हमें देखिबा the secretariat is headed by the education secretary. जोटा कि हमें कहूचे कि education secretary हम ओडिशा रो. Some state have only one education secretary who is responsible for all level of education. जने हमरो रहउछंती के ना एजुकेशनल सम स्टेट रे अछंती जने ही एजुकेशनल सेक्रेटरी अछंती जे कि से ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन को से कंट्रोल करंती रिस्पांसिबिलिटी तांको अंडर रे थाए ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन मींस हमें देखियो कहबा कि जोटा हे गेला हमरा AICT हे गेला टेक्निकल एजुकेशन हैला ओके मेडिकल एजुकेशन हैला मैनेजमेंट एजुकेशन टीचर एजुकेशन ए सब जिंसो Some state, on the other hand, have two or more secretaries looking after the different level sector of education in state where there is only one education secretary. There are other functionaries such as special secretary, deputy secretary,
ये सब जिनस है आमर जड़े रे फर्स्ट गोटे सेक्रेटरी रे जड़े रोचे एडिशनल सेक्रेटरी जड़े रोचे डेप्यूटी सेक्रेटरी जोटा कि आम ओडिशार स्ट्रक्चर ओके जड़े आमर मेन सेक्रेटरी रे एडिशनल एंड डेप्यूटी at the union level एटा हमें स्टेट लेवल पढ़ले जदि हमें यूनियन लेवल कथा कहबा only general and technical education fall under the purview of the secretary for secondary and higher education. Professional education is looked after by the secretaries of the respective ministry. Agricultural education is under the purview of secretary of the ministry of agriculture. जदि यूनियन लेवल कथा कहबा किए आसबे ना सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मेडिकल एजुकेशन अंडर भितर किए आसबे ना डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ये समस्त आसबे तापर हमें देखिबा कि ए फ्यू स्टेट्स आंध्र प्रदेश तमिलनाडु मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल हैव एस्टैब्लिश्ड हायर एजुकेशन कमिशन निजे गोटे कौन कर एस्टाब्लिश कर हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ व्हिच द चेयरमैन इज द एजुकेशन मिनिस्टर ओके तो तांकर जी अच्छा कि से निजे गोटे एस्टाब्लिश कर हायर एजुकेशन कमिशन जी कि तांकर चेयरमैन आमर किए अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर जी कि आमर एजुकेशन मिनिस्टर किए ओके जी आमर एजुकेशन मिनिस्टर अच्छा धर्मेंद्र प्रधान ओके an eminent educationist serve as the vice chairman the responsibility of the जे तापरे कोन जे eminent educationist अच्छा से vice chairman रहिबे the responsibility of the commission are improving the organization से जो commission रो कोन तार responsibilities अछि ना improving the organization and promoting higher education in the state particular तांकर state रो से माने कोन करिवे ना तांकर higher education को improve करी improving पई केमिति organize करिवे केमिति promotion करिवे then determining and maintaining standard of teaching से देखिबो से तांकर state रे and universities तांकर जो universities अछि से state रे तार केमिति से माने स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को मेंटेन करिके रखिबे तांकर एग्जामिनेशन रिसर्च सिस्टम को केमिति मेंटेन करिवे से जिंस सब देखिबे The functions of the commissions are similar to that of the UGC at the national level. हमें स्टेट लेवल पढ़थिले ओके एबे नेशनल लेवल देखिबा जनरली ऑल द स्टेट हैव डायरेक्टरेट्स ऑफ हायर एजुकेशन जनरली हमर जते स्टेट अछि स्टेट रे जहां भी यूनिवर्सिटीज अछि सेटा हायर एजुकेशन ही ताको कंडक्ट करूची देयर आर नॉर्मली टू डायरेक्टरेट्स dealing with the higher education such as directorates of collegiate education and directorate of technical education जदि हमें national level कथा कहबा तो दीटा अछंती हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट्स किए ना डायरेक्टरेट्स ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन जोटा कि कॉलेज लेवल रे आसीबो एंड टेक्निकल एजुकेशन डायरेक्टरेट्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मींस जेते प्रकार हमरो टेक्निकल एजुकेशन अछि each of these directorates is headed by a director who take care of the administration at the collegiate at technical educational level तापरे हैला administrative structure at the university level रे कोन अछि हम एटा पढले स्टेट लेवल रे administrative level structure तापरे हम देखिबा university level रे कोन कोन अछि university in India are autonomous institution यूनिवर्सिटी गोटे होचे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन से निजे ही सब जिंस करिवो they have their own administrative structure and management style तार पर्टिकुलर तार निजर administrative structure अछि तार management style भी निजर the president of India is the visitor of all central university except the Vishwa Bharati where the prime minister is the visitor. In case of state university, the governor of the respective state is the chancellor. Both the visitor and the chancellor normally do not have any administrative role in day-to-day functioning of the university. यदि हमें देखिबा in case state university the governor of the respective state is the chancellor हैला केते गोटे स्टेट रो गवर्नर के जो गवर्नर होछंती से होछंती चांसलर
यूनिवर्सिटी ओके ता तळे होउछंती VC Vice Chancellor. Both the visitor and the Chancellor normally do not have any administrative role in the day-to-day functioning of the university. बुझिपारल visitor ଆଉ chancellor ର କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ administrative ରୋଲ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ day to day functioning the university ପାଇଁ ସବୁ ତକ ରୋଲ କାହାର ଅଛି ନା VC ର The Vice Chancellor is the most important functionary who is the chief executive and academic authority of university. ଗୋଟେ university କେମିତି ସେ ଚଳେଇବ କେମିତି academic authorities ତାର କେମିତି ରହିବ ସବୁର ସେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର he or she exercise general control one and supervision of the overall functioning of the university. He has the secretariat, the register of the university supervising its work. ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ या रेजिस्टर आमे जो कहू यूनिवर्सिटी मानकर सब रेजिस्ट्रार अछंती भाइस चांसलर आगे चांसलर होले चांसलर पर भाइस चांसलर पर रेजिस्टर जदि भिसी ये अछंती से नाहंती कोडे जाइछंती से विजिटिंग रे जो जाइछंती तो रेजिस्टर से काम सब करिवे यूनिवर्सिटी सुपरवाइज करिवे किए ना रेजिस्टर हैला रेजिस्टर स्टूडेंट ऑफ वेलफेयर पई भी बहुत काम करंती ओके तो तापर कहला इन सर्टेन यूनिवर्सिटी वेयर एकेडमिक प्रोग्राम्स आर डाइवर्स and where the student strength is large one may find post of pro vice chancellor जदि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ अच्छी एकेडमिक प्रोग्राम्स बहुत अच्छी स्टूडेंट स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी तो सेठी कौन करेंगे ना से माने आ गोटे पोस्ट से माने एस्टाब्लिश करेंगे जोटा कि प्रो वाइस चांसलर बोले आमे कहू ओके तो एठी हमें देखिले कि फर्स्ट हमर चांसलर रहिले जे कि यूनिवर्सिटी लेवल रे हमर एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रहला कोन ना फर्स्ट रहला हमर चांसलर ओके फर्स्ट हमर रहले विजिटर जे के हमर रहउछंती प्राइम मिनिस्टर ओके सॉरी प्रेसिडेंट विजिटर हमर प्रेसिडेंट रहिले तापर हमर रहिले कि चांसलर होउछंती हमर गवर्नर सेमान दि जनकर किछि काम नाही एथि रोल प्ले से माने ते करंती नहीं तांकर इंपोर्टेंट रोल प्ले नाही ता तळको आसिला हमर VC जे कि से डे टू डे लाइफ रे को जहा भी किछि होची यूनिवर्सिटी रो सब तक से इंपोर्टेंट फंक्शनरी रोल प्ले करंती ता परे ता तळे तांकर रहंती सुपरविजन पे सेक्रेटेरिएट कम रजिस्टर जदि भाइस चांसलर रहू नाहंती ताले रजिस्टर सुपरवाइज करिवे जदि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ अच्छी स्टूडेंट्स माने बहुत अच्छी तापर प्रोग्राम्स बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स अच्छी एकेडमिक प्रोग्राम्स ताले सेठी आउ जने प्रो वाइस चांसलर रहिबे ओके ता तळको आउ के रहिबे डिपार्टमेंट मानक भितरे ना दे आर आल्सो डीन एंड डायरेक्टर्स ऑफ स्टडीज स्कूल्स देन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और सेंटर ओके तापर डीन भी रहिबे डीन तळको एचओडी भी रहिबे हैला Normally, is the most of the university, the deanship and headship are available on a rotation basis. ହେଲା ଯଦି ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା କହିବା ଡିନସିପ୍ ଆଉ ଯୋଉ ଏଚଓଡିସିପ୍ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେଟା ରୋଟେସନ ବେସିସ୍ ରେ ହଉଛି ଯିଏ ଆଗେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ଦିଆଯିବ କଣ ନା ଡିନ୍ ଆଉ ଏଚଓଡି ମନେକର ଗୋଟେ କଲେଜ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 5 ଜଣ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ହାୟରରେ ରହିଲେ 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଲେ ସେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡିନସିପ୍ ପାଇବେ ତା ତଳେ ଯିଏ ରହିଲେ ସେ ହେଡସିପ୍ ପାଇବେ ଏଚଓଡି ପାଇବେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଡିନସିପ୍ ର ମେ ବି 3 ଇୟର୍ସ ଥାଏ ସେଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱାଇଜ ଭେରି करे डीनशिप एंड हेडशिप 3 इयर्स या 2 इयर्स सेटा यूनिवर्सिटी वाइज भैरी करे सेटा रोटेशन बेसिस रे चलिबो ओके देयर आर सर्टेन स्टैट्यूटरी बॉडीज अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड मेकिंग रोड्स टू इंप्लीमेंट पॉलिसीज ओके तो तार गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी रहइबो जोटे कि यूनिवर्सिटी हिसाब रे स्ट्रक्चर हिसाब रे स्टैट्यूटरी बॉडी करा जिवो आउ सेही से माने कोन करिवे ना पॉलिसी फॉर्मुलेट करिवे आउ जहां भी किछि पॉलिसी से माने फॉर्मुलेट करछन से पॉलिसी को से इंप्लीमेंट करिवे सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट 2 स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे हमें नुवा यूनिट पढिबा जदि कहारो किछि डाउट अछि देन क्वेश्चन पचारो
कार किसी डाउट नहीं? नहीं मैम। ओके ठीक अच्छे ताहले हमें नेक्स्ट क्लास कोडे नुआ यूनिट पढ़वा। Yes, ma'am. ओके ठीक अच्छे थैंक यू Thank you, ma'am. for you attending this lecture. Okay, thank you.